Good morning, students. Welcome back to your online business study class. And today we will be discussing about a very important topic, that is classification of financial market. When we talk about classification of financial market, before that, we'll just have a quick review that what we have done in financial market. So in a financial market, I have explained you that there are two people, the saver who have excess fund and the company and the people who want investor. It's basically financial market pay a platform way which work as a link between the investor and the saver. So that is the work done by financial market. Now, financial market we used to divide into two part, money market and capital market. We have already discussed about the money market. That money market is basically a market by which we are able to raise the short term funds, right, which basically deal in monetary assets and whose period of maturity is up to 1 year. Means all those instruments by which we can raise funds for our organization for a short term of period, and that short term of period means where the maturity rate will be below 1 year. So these all will be called as a money market instrument, or the platform will be known as money market. Now money market instrument are basically having low risk, they are unsecured, and they are basically short term debt instrument, and they are very highly liquid because easily they can be able to convert it into cash. This is what we have already done. And in money market, there are certain organizational institutions which are called as a participant of money market. These are Reserve Bank of India, near commercial bank, and your non-banking finance companies, and state government, large corporate house, and mutual fund. So these are basically the different participant of money market, right? So basic main center point you have to remember here is that money market is basically a platform by which we use to raise out fund for the period of time, and short period of time basically means these instruments will have maturity for up to 1 year. Now next we will be discussing today about the different money market instrument. It means short period of time के लिए कौन कौन से instrument money market के हैं आपके. So the first was your T bill, that is called as treasury bill. Now when we talk about treasury bill, this is basically an instrument of short term borrowing. It means it is used for a short term funds, but this is government of India maturing in less than 1 year. Now a treasury bill is basically an instrument short term which is borrowed by government of India, and the maturity period is less than 1 year. Treasury bill, children, you have to understand, are also known as zero coupon bonds, and these bonds are basically issued by Reserve Bank of India, right? But Reserve Bank of India is issuing these bills on behalf of central government, not on behalf of itself, right? So you have to remember this, that treasury bill हमेशा कौन करता है इशू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है, लेकिन किसके बिहाफ पे इशू कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू कर रहा है. और ये एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है गवर्नमेंट की, जिसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है दिस इज ऑलवेज लेस देन 1 year, एंड दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज अ जीरो कूपन बॉन्ड ऑल्सो. Right. Now when we say treasury bill are issued in a form of promissory note. You have seen some of the treasury bill in net also, internet also, that they are in a form of promissory note. Promissory note इसलिए कहते हैं हम इसे because the date was mentioned where the government or RBI on behalf of central government is promising the investor that they will be written, these treasury bill amount will be written on a particular maturity date to the issuer, right? So this was all about treasury bill. Now very important thing about treasury bill is that treasury bill is issued in some another way, another amount, and it is redeemed, the values is another. It say basically that the difference between the price at which the treasury bill are issued is different, and the redemption value in the interest receivable on them are called as discount. It means the amount at the time when somebody issue the treasury bill, the amount is different, and when treasury bill get mature, the amount which is getted to the issuer, that amount is different, right? So
the amount in which we will issue the treasury bill, it means the RBI जो जिस amount पे treasury bill को issue करेगा, that is always called as a discount amount. For example, you can understand it from here also. Example is given. Suppose an investor purchase 91 treasury bill, यानी एक investor ने 91 days के लिए एक treasury bill को purchase किया, right? It means the maturity date होगी treasury bill की after 91 days, right? Now face value of that treasury bill is 1 lakh. इट मीन्स उस ट्रेजरी बिल में जो मेंशन होगा फेस वैल्यू वो कितना है 1 लाख का है फॉर 96,000. बट जो इशू हुई है वो RBI के थ्रू वो कितने में हुई है 96,000 पे करने के बाद में ट्रेजरी बिल रिसीव हुआ है. इट मीन्स द 4,000 इज देयर विच अ person who is purchasing and who is taking the treasury bill need to give less, right? So this 4,000 will be called as a discounting. ये 4,000 क्या हो जाएगा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इशूइंग एंड द रिडीमिंग, दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग. सो द डिफरेंस ऑफ 4,000 बिटवीन द प्रोसीड रिसीव्ड एट मेच्योरिटी and the amount paid to purchase the bill represent the interest received by him. It means आपने 96 में क्या किया, ट्रेजरी बिल को इशू 1 लाख का फेस वैल्यू का ट्रेजरी बिल था, आपने 96 में इशू कर दिया, राइट? लेकिन जब आपने 96 में इशू किया तो हम उसे इशू कर रहे हैं ऑन डिस्काउंट पे. लेकिन जब वो रिडीम्ड हो रहा है, वी आर गिविंग दैट पर्सन बैक 1 लाख. इट मीन्स वी आर गिविंग हिम 4,000 एक्स्ट्रा. तो दैट टाइम वी विल से दैट द बिल इज रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट अमाउंट ऑल्सो, right? So this is a very important instrument of money market by which we use to raise out fund for a short period of time. Now next is commercial paper, that is also called as CP, right? Commercial paper is also one of the another very important instrument of money market. This is again a short term unsecured promissory note. Unsecured promissory note इसलिए बोलते हैं because when we are purchasing any commercial paper we don't need to give any कोलेट्रल और मॉर्गेज टू द पर्सन. हमें कोई कोलेट्रल और मॉर्गेज नहीं रखनी पड़ती है, ऑफ एसेट्स हमने नहीं रखनी पड़ती. दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट. एक प्रॉमिस है दैट इट विल बी रीपेड, बट उसके लिए आपको कोई एसेट्स मॉर्गेज पे नहीं रखनी पड़ रही है. नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद अ फिक्स मेच्योरिटी पीरियड. नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट heading of this commercial paper, that CP is always delivered on the fixed date and that fixed date is called as a maturity period. यानी CP का जो maturity period होता है उसी period पे ही वो आपको क्या होगा, receive होगा. It is issued by large and credit worthy companies to raise short term funds at a lower rate of interest than market rate. Now when we talk about CP, who is issuing the CP? As we know that treasury bill कौन issue कर रहा था, RBI issue कर रहा था. Or RBI is issuing this on the behalf of central government, because central government also required revenues. They need to do lots of expenditures, and how they are arranging these expenditures, the main thing or main source is the tax, right? And after that they need to issue lots of instrument also, right? So same thing is with CP also, the commercial paper also. When we talk about commercial paper is basically issued by large and credit worthy companies. Means a big companies, those net profit is very large, and the big companies, those whose financial condition is very good, right? These companies try to raise out funds by issuing the commercial papers for the short term of requirement, right? Now why the people take the commercial paper of these organization? Because the rate of interest is less over there in comparison to market. Now when we talk about commercial paper, the maturity period play a very important role here. It is basically maturity period of 15 days to 1 year. यानी जो CP issues होते हैं उनकी जो maturity period होती है वो कितनी होती, 15 से 1 साल के बीच में होती है. The issuance of commercial paper is an alternative to bank borrowing for large companies that are generally considered to be financially strong. It means if any organizations who required funds, instead of going through with the bank, they can ask these funds, they can raise their funds by the help of taking the commercial paper of some another good organization also, some another big organization also. So this is just a alternative of bank borrowing. Now it is completely a choice of a organization, or it is completely a choice that from where they want to raise the funds. Definitely we will be raising funds for our business organization where we need to give less and less flotation cost, जहाँ पे हमारे expenditures क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कम होंगे. Now we can have an example. Say suppose a company need to long term finance to buy some machinery
In order to raise the long-term funds in the capital market, the company will have to incur flotation cost. Costs associated with floating of any issues are brokerage, commissions, printing, application, advertising. Fund raised through commercial paper are used to meet the flotation cost. This is known as bridge financing. Now here both the things are linked with each other. The capital market, it means we are talking about the long term sources of fund also, and we are talking about the need of short terms, right? So they are just giving an example that suppose a company need a long term finance. अगर एक कंपनी को लंबे टाइम के लिए फाइनेंस के फंड्स की ज़रूरत है, so they are purchasing maybe machinery, they are installing maybe machinery, they are परचेजिंग बिल्डिंग्स एसेट्स एनीथिंग, तो उसके लिए हमें जो फाइनेंस चाहिए होता है वो किस में आता है, लॉन्ग टर्म में आता है, राइट? इन ऑर्डर टू रेज द लॉन्ग टर्म फंड्स, इस लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज करने के लिए जब वो कैपिटल मार्केट में जाएगा, दैट टाइम कंपनी ऑल्सो नीड टू डू लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स, यानी लोन या उसको फंड्स ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, उसके बहुत सारे एक्सपेंडिशन होंगे, उसके बहुत सारे मिडिटर इन बिटवीन के खर्चे होंगे, विच इज़ कॉल्ड एज फ्लोटेशन कॉस्ट, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट एसोसिएटेड विथ फ्लोटिंग ऑफ इशूज़ आर ब्रोकेज, यानी जिनके थ्रू वो मिडिटर को यूज़ करके कैपिटल मार्केट से फंड्स को रेज करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रोकेज, राइट? कमीशंस लगेंगे, उसकी प्रिंटिंग और एप्लीकेशन होगी, उसको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा लोन्स के लिए, फंड्स के लिए. सो ये जो छोटे छोटे खर्चे आ रहे हैं, दैट इज़ वॉट दीज ऑल आर can be fulfilled by the help of money market instrument, and they can fulfill by the help of commercial paper, right? So this is like when we are raising through commercial paper are used to meet the flotation cost. This is called as a bridge financing, यानी वो funds जिसको हम क्यों रेस करें, कमर्शियल पेपर के थ्रू रेस कर रहे हैं फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए. क्यों? वो फ्लोटेशन कॉस्ट किस में आ रही है, आपके आ रही है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में आ रही है, राइट? सो दैट कॉन्सेप्ट विल बी कॉल्ड एज ब्रिज फाइनेंसिंग. और क्यों ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं? क्योंकि वो किसका गैप कंप्लीट कर रहा है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के बीच में लिंक कर रहा है. दैट इज द रीजन वी कॉल्ड इज bridge financing. Now next instrument of money market is your call money. Now what is basically call money? As the name is saying, it means basically we are talking about money market, तो short term instrument तो होगा ये fund raise करने का, but at the time when the consumer have the demand, that is the time it should be repaid. That is the reason we call it call money. It's basically say that call money is a short term finance repayable on demand. यानी क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंसिंग का, और जो कब पे होता है, कब रीपे होता है, जब उसकी डिमांड होती है, with a maturity period of 1 day to 15 days, used for interbank transactions. Now this is basically related with commercial bank have to maintain a minimum cash balance known as cash reserve ratio. Call money mein you have to remember that we are talking about commercial bank, and there is one very important concept here, that is CRR, which some of you must be knowing, that is called as cash reserve ratio. Now when we talk about commercial bank which provide loan to the organization and to the public also, there is a particular amount which is cash reserve ratio. According to the Reserve Bank of India, a cash reserve ratio is must to be maintained by each and every commercial bank. यानी हर एक commercial bank के लिए मैंडेटरी होता है कि उसको एक particular fund की amount, यानी मिनिमम अमाउंट अपने बैंक में रखनी ही रखनी है, अवेलेबल होनी चाहिए, और उस अमाउंट को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो. दिस CRR इज़ डिक्लेयर बाय RBI. ये CRR की अमाउंट कितनी होगी ये मेंटेन करता है, और इसको डिक्लेयर करने का काम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का. नाउ एवरी कमर्शियल बैंक नीड टू मेंटेन दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ CRR इनटू द बैंक, and because RBI can change this CRR amount, cash reserve ratio amount, even day to day or even hour to hour also, according to the indexing. यानी स्टॉक मार्केट में जो इंडेक्सिंग होती है उसके अकॉर्डिंग जो RBI है CRR अमाउंट को चेंज करता रहता है, राइट? सो इन केस एनी कमर्शियल बैंक डज नॉट हैव दैट पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट ऑफ CRR, दैट टाइम दे कैन बोरो दिस फॉर मेंटेनिंग दैट मिनिमम CRR amount, they can borrow the money from another commercial bank, and this money will be paid back to them at the time the bank will demand it. That is the reason it is called as call money. Now we have to understand one more thing here, that when the interest rate paid on the call money loan is called as call rate. It means when the bank or commercial bank ask for another bank
to give them certain money for maintaining their cash reserve ratio, they need to repay that money on demand of that bank and with interest amount. So that interest rate which will be paid on the call money loan will be called as call rate. Right? So this is about call money. Now next is certificate of deposit, which is called as basically CD. CD आपके दोबारा से, because this is again money market का instrument है, तो short term हुआ, short term instrument for raising the funds, unsecured है, negotiable होता है, and this is basically a short term instrument in bearer form issued by a commercial bank and development financial institution. This is very important here that CD को कौन issue कर सकता है. It is basically a short term unsecured negotiable instrument which is issued either by the commercial bank या फिर इसको development of financial institutions क्या करते हैं, issued करते हैं. दे कैन बी इशू टू इंडिविजुअल, आप इसे इंडिविजुअल को भी इशू कर सकते हो, कॉरपोरेशन किसी कंपनी को इशूज कर सकते हो. एंड व्हेन दे आर बेसिकली इशू एट द टाइम ऑफ टाइट लिक्विडिटी, जबकि कैश की क्या होती है, टाइटनेस होती है, कैश कम होता है. दैट टाइम वी ट्राई टू इशू द CD. व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक इज स्लो बट द डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई. इट मीन जब बैंक में जो लिक्विडिटी होती है, कैश जो होता है वो कम होता है, लेकिन जो लोन की डिमांड होती है वो हाई हो जाती है. उस टाइम पे क्या करते हैं, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं या फिर जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये वो क्या कर देते हैं, फॉर अरेंजिंग द फाइनेंस दे यूज CD, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. नेक्स्ट इज कमर्शियल बिल. Now commercial bill, this is an important topic of your account also, so this will be not a new topic, new thing for you. Commercial bill basically say that it's basically a bill of exchange. एक bill of exchange को ही हम commercial bill भी बोलते हैं. Used to finance the working capital requirement of a business, यानी जो business के day to day की activities के लिए जो requirement होती है funds के लिए, उसको फाइनेंसिंग करने के लिए हम कमर्शियल बिल और CB को यूज़ करते हैं. राइट. It is a short-term negotiable self-liquidating instrument which is used to finance the credit sale of firm. This is very important. यानी commercial bill short term तो है, negotiable भी है क्योंकि money market का instrument है, और self-liquidating instrument है. Automatically आप किसी को commercial bill दिखाओगे तो आप जब जिसको उसे पे करना होगा वो उसको कैश में कन्वर्ट करके आपको दे देगा. So that is the reason it is called as self-liquidating. Now who are the one who's using the commercial bill? It's basically used when goods are sold on credit. यानी जब goods की जो sold होते हैं, जब goods बेचे जाते हैं, वो कैश में ना बेच के आप क्रेडिट में बेच रहे हो, यानी आपकी इमीडिएट पेमेंट नहीं हो रही है. आपका परचेजर और बायर आपसे प्रॉमिस कर रहा है दैट दे विल पे दिस अमाउंट लेटर ऑन. इट मीन्स दैट payment is not done, it is on credit basis. The buyer become liable to make payment on a specific date in futures. Now because buyer is purchasing the goods on credit, but in future on a specific date the buyer need to pay out the money. Now what will happen here, the seller will be called as drawer. commercial bill के केस में seller को हम क्या बोलते हैं, drawer बोलते हैं. एंड द परचेजर विल बी कॉल एज ड्रॉई. परचेजर को हम क्या बोलेंगे, ड्रॉई बोलेंगे. सो व्हेन द सेलर ऑफ गुड ड्रॉ द बिल, जब गुड्स का जो सेलर होता है वो बिल ड्रॉ करेगा, एंड द बायर दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉई विल एक्सेप्ट द बिल. ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल विल बी कॉल्ड एज अ मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट. जो बिल क्या हो जाएगा, एक उसकी लीगल एंटिटी हो जाएगी, एक मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा जो मार्केट में लिक्विडेट कराया जा सकता है. एंड दैट इज द टाइम दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रेड बिल. सो दिस विल बेसिकली हैपन व्हेन ड्रॉवर विल ड्रॉ इट and the drawer will accept it, it will be called as a trade bill. Now when a seller need the money, in case the seller need the money, when seller will go and seller will discount or register that bill on commercial bank, when a trade bill which is accepted by a commercial bank, it will be known as commercial bill. यानी पहले एक जो बिल था, सिंपल बिल था, जो ड्रॉवर ने ड्रॉवी को ड्रॉ करके दिया, ड्रॉवी ने उसे एक्सेप्ट किया. वी विल नॉट से सेलर परचेजर, वी विल से ड्रॉवर ड्रॉई. राइट. सो व्हेन द ड्रॉवी विल एक्सेप्ट इट, इट विल बिकम ट्रेड बिल. उसी ट्रेड बिल को जब आपका सेलर कमर्शियल बैंक में ले गया और उसने कमर्शियल में उसको रजिस्टर्ड कराया, कमर्शियल बैंक ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, दैट टाइम दैट बिल विल बी नोन एज कमर्शियल बिल. Right. So these all are basically the different instrument of money market. आपको सिर्फ इतना याद रखना, मनी मार्केट का मतलब है जिसके थ्रू हम शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज कर रहे हैं. राइट. नाउ कैपिटल मार्केट, जस्ट अपोजिट ऑफ मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट refers to the facilitate and institutional management arrangement
through which long-term funds, both debt and equity, are raised and invested. It means capital market is basically a platform by which we are able to raise out the long-term funds in a form of debt or equity, right? यानी जहाँ पे हम लंबे टाइम के लिए फंड्स अरेंज करेंगे डेप्ट और इक्विटी के फॉर्म में, that is called as capital market. Now, when we try to raise funds from capital market, we need to go through a lots of series of channel. Like for the saving of the communities are made available for industrial and commercial enterprises and for the public in general. It direct these saving into their most productive use, leading to growth and development of economy. It means when we talk about our community, one of the community who are called as a saver, जिनके पास में excess fund होता है, they have been given the options that way they can invest their excess fund. Now it is a duty of a capital market to invest that fund into a most productive manner from where more and more return can be received. Now, which is called as the ideal capital market. Ideal capital market क्या होता है? Ideal capital market basically is क्या है? एक ऐसी place where finance is available at reasonable cost. जहाँ पे हम finance को कैसे available कर सके? Reasonable cost में available कर सके. जहाँ पे finance को raise करने की flotation cost कैसी हो? कम से कम हो. यानी expenditures कैसे हो? कम से कम हो. Now, it is basically essential that all the financial institutions which are linked with the capital market are operating free, फेयर, कॉम्पिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट. यानी उनके जितने भी वर्क होते हैं वो क्या है? फ्री हैं, किसी दूसरे के बर्डन्स में नहीं कर रहे हो. They are not competitive to each other, and they work, whatever work they are doing, that is fair and transparent. It is transparent to the saver also and to the investor also. Now let's see how we are able to differentiate between capital market and money market. Now when we talk about capital market, we all already discussed about this, that capital market को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, the primary market and secondary market, which we will be going to discuss later on also. And primary market basically a market where new securities are sold, जहाँ पे कि नई securities sold होती हैं. Suppose a company is there who is first time issuing their share into the capital market, so that will be coming inside your primary market. सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी कंपनी जो अपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को रीसेल कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मार्केट. नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. द फर्स्ट इज पार्टिसिपेंट. कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्टिसिपेंट, कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट हो गए हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, कॉर्पोरेट एंटिटीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स. Now these are member of public, so these all are basically the participant of capital market. Now money market का जो main participant होता है that is RBI, Reserve Bank of India. आपके financial institutions, आपकी financial companies and individual investor through although permitted to transact in secondary money market do not normally do so, right? So these are the participant who used to institutions, organization who used to participate into money market and कैपिटल मार्केट. इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हमने अभी पढ़े हैं. द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट इज इक्विटी शेयर्स, आपके डिवेंचर्स, बॉन्ड्स और प्रेफरेंशियल शेयर्स. ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम मनी मार्केट में कैपिटल मार्केट में ट्रेड करते हैं. And the main instrument traded into the money market are short term के instrument like short term debts, आपके T bill that is called as treasury bill, आपके trade bills reports हो गए, commercial papers हो गया, आपका CD हो गया. So these all are money market instrument. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट आउटले. इन्वेस्टमेंट आउटले किस में ज़्यादा होता है? इन्वेस्टमेंट आउटले इन कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी डज नॉट नेसेसरी रिक्वायर अ ह्यूज फाइनेंशियल आउटले. नाउ दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड because when we talk about investment, I have explained you that capital market is basically a platform where which we will be able to raise funds for a long period of time. But now investment outlay में just opposite होता है. capital market के through हम जो investment करते हैं और जो investment required होता है उसके लिए ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती है. द रीज़न बिहाइंड इज दैट हे वी आर सेलिंग और वी आर ट्रेडिंग द सिक्योरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स. आप जो शेयर्स यहाँ पे सोल्ड करने वाले हो वो आप एक साथ सारे शेयर्स नहीं सोल्ड होते हैं, यानी पर शेयर की यहाँ पे वैल्यूज़ बताई जाती है. For example, the value of unit of security is generally low because rupees 10 for per share, rupees 100 for per share. So here we will be not going through with multiple of shares.
यहाँ पे जब आप ट्रेडिंग होगी तो पर वैल्यू के यानी यूनिट के वैल्यू के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग होती है. बट इन केस ऑफ मनी मार्केट द इन्वेस्टमेंट आउटले इज हाई, क्योंकि वहाँ पे यूनिट के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग नहीं होती है. Next is duration. The capital market, because dealing into a medium and long term financing of securities like equity and debentures, जबकि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, मैक्सिमम क्या होते हैं 1 ईयर के लिए होते हैं, और कैपिटल मार्केट के एक से ज़्यादा के लिए होते हैं. लिक्विडिटी. कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज आर ऑल्सो लिक्विड, दे कैन ऑल्सो बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, बिकॉज हम ट्रेडिंग करते हैं उनकी तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन जो मनी मार्केट के सिक्योरिटीज होते हैं दे आर हाईली लिक्विड, easily they can be converted. Safety, which is more safe. Now everybody know आपका मनी, आपकी जो कैश हम जो इन्वेस्ट करेंगे, जो जितने टाइम के लिए ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहेगा बिजनेस में, उससे रेट ऑफ रिटर्न भी उतना ही मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं हाई, और रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है. नाउ इन केस ऑफ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट दे आर कॉल्ड एज मोर रिस्क बोथ बिकॉज द रिटर्न कैन बी ऑल्सो मोर एंड द प्रिंसिपल अमाउंट और रिपेमेंट कैन ऑल्सो बी मोर, और इसके साथ में अगर रिस्क हुआ तो रिस्क विल ऑल्सो बी मोर. इन केस ऑफ मनी मार्केट बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट आर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक नहीं रहते हैं, तो रिस्क के चांसेस भी क्या होते हैं, लेस ही होते हैं. Now expected rate of return. Now simple, because capital market we are going to have the investment for a long period of time where risk is also there, in the same time the expected return is also more. In case of money market, because the instrument are for a short period of time, the risk is also less and expected return is also less. So this was all about the difference between capital market and money market. Now we will be taking द प्राइमरी मार्केट यानी अब हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट का फर्स्ट क्लासिफिकेशन, एंड दैट वाज प्राइमरी मार्केट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्राइमरी मार्केट क्या है, आपको सिंपली इसको समझना है. द प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट विच और वे आर इशूइंग द शेयर फर्स्ट टाइम, यानी जहाँ पे न्यू शेयर्स को इश्यूज किए जाते हैं, न्यू शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को सोल्ड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मार्केट. नाउ just see the definition here. Primary market is also known as the new issue market. It deal with new securities being issued for first time. यानी प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं. वाई? बिकॉज द सिक्योरिटीज विच वी आर गोइंग टू ट्रेड इन टू द प्राइमरी मार्केट दे आर ट्रेडेड फर्स्ट टाइम, वो पहली बार इशूज़ हुई हैं और पहली बार सोल्ड होने के लिए प्लेटफॉर्म पे आई. दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज न्यू इशू मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट यानी फर्स्ट मार्केट. The essential function of primary market is to facilitate the transfer of investable funds from saver to entrepreneur seeking to establishing new enterprise the issue of security for the first time. It means the main function what primary market is doing is just to check or just to transfer the funds which is available to the saver फ्रॉम सेवर टू whom, टू द एंटरप्रेन्योर. यानी सेवर से उसके एक्सेस फंड को और सेविंग फंड को कहाँ पे यूज़ करना, एंटरप्रेन्योर में यूज़ करना, राइट, ताकि वो क्या कर सके, अपनी न्यू सिक्योरिटीज़ को सोल्ड कर सके और मनी चैनलाइज हो सके. नाउ द इन्वेस्टर इन दिस मार्केट आर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, insurance companies, mutual fund and individual. It means who are the people who are investing into primary market. It is basically the investor are here the bank, the financial institutions, insurance company and mutual fund and individual. Now a company who can raise capital through primary market in the form of equity share, preferential share, debentures, loan and deposit, right. Now this was all about the primary market. Children, you basically need to understand here is primary market is basically a platform where the new securities are sold or traded, or that is the reason it is also called as new issue market. Now the method of flotations, it means how in the primary market new securities can be floated. कैसे प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज़ को हम सोल्ड कर सकते हैं. द फर्स्ट वे और फर्स्ट मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट इज ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्ट. ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्ट में व्हाट वी बेसिकली डू इज दैट offer through prospect is the most popular method of raising fund by public company in the primary market. इसको offer through prospect is basically used by public company और प्राइमरी मार्केट में यूज़ करती हैं. हेयर दे बेसिकली यूज़ टू इनवाइट और सब्सक्रिप्शन. ये क्या करती हैं, यहाँ पे हमें एक प्रॉस्पेक्ट इशू करना होता है पब्लिक को, और पब्लिक दोज हु वांट टू परचेज द शेयर्स दे विल सब्सक्राइब इट, दे विल फिल अ फॉर्म
A prospect will make a direct appeal to the investor to raise their capital and through an advertisement and newspaper and magazine, right? So in this way, the issue may be underwritten and also are required to be listed on at least one stock exchange. The content of prospect have to be accordance with the provision of Companies and Act and SEBI disclosure and investor protection guidelines. Means when we talk about method of flotation, the first method is offer through prospect. Offer through prospect में basically होता क्या है that the company who want to sell their shares वो एक prospect को issue करती हैं public general public के लिए. The general public who want to purchase the share, they will go through with the prospect, they will see the prospect and they will appeal to the investor for raising or for investing the money. The newspapers and magazine, they will put the advertisement. And one thing need to understand here is that offer through prospect is only for the company which are coming inside the public company, यानी ये सिर्फ उन्हीं कंपनी के लिए जो कि पब्लिक कंपनी के अंदर आती हैं. और ऐसी कंपनी को दे नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सेबी, यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशन और गाइडेंस होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है. और दैट ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी लिस्टेड इन वन स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज में वो ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड होनी चाहिए. नेक्स्ट इज ऑफर फॉर सेल. नाउ दिस इज द अनदर वे बाय विच द मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ प्राइमरी मार्केट कैन बी डन. अंडर दिस मेथड सिक्योरिटीज़ आर नॉट इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक. जैसे हम इससे पहले सिक्योरिटीज़ को क्या कर रहे थे, प्रॉस्पेक्ट फॉर्म में डायरेक्टली पब्लिक को इशू कर दे रहे थे. बट हेयर दे आर नॉट डायरेक्टली इशूड टू द पब्लिक, but we are offered to sell through intermediators, yani we are using intermediator for selling the shares and debentures are securities, right? In case a company sells securities at a agreed price to broker who in turn resell them to the investing public, it basically say a company will sell securities to the intermediator and that intermediator will be called as broker, and then broker will again resell that security to the investing public. So this method is called as offer for sell method. Now next is private placement. Now private placement basically say that private placement is the allotment of securities by a company to the institutional investors and some selected individuals. It means again यहाँ पे intermediate role play हो रहा है. डायरेक्टली पब्लिक को नहीं इशू की जा रही हैं शेयर्स, बट एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सोल्ड कर दी जा रही हैं. इट हेल्प टू रेज कैपिटल मोर क्विकली देन अ पब्लिक इशू. Access to the primary market can be expensive on account of various mandatory and non-mandatory expenses. Some company therefore cannot afford a public issue and choose to use private placement. Yani all those organizations which are not issuing their shares or which are not issuing their security directly to the public, they used to go through with the option of private placement. वो किसी private institutional placement के option पे जाती हैं, वहाँ अपनी securities को sold करती हैं, and then these private placement will become responsible for reselling these securities and giving payment to the organization. नेक्स्ट इज राइट इशू. नाउ राइट इशू का जो टर्म होता है, दिस इज बेसिकली अ प्रिविलेज विच इज गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू सब्सक्राइब टू अ न्यू इशू ऑफ शेयर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कंपनी. The shareholders are offered the right to buy new shares in proportion to the number of share all they already possess. Now this say right issue basically say that all those shareholder we are just giving a privilege here. हम एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और प्रिविलेज देते हैं यहाँ पे पुराने शेयर होल्डर्स को, जिनके पास में ऑर्गेनाइजेशन के ऑलरेडी पुराने शेयर्स पड़े हुए हैं, दैट दे कैन परचेज whenever any organization issue new shares. So they go through with first their own shareholders, जो पुराने शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रिविलेज देती है कि इफ़ दे वांट टू परचेज द न्यू शेयर, दे कैन परचेज दीज न्यू शेयर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ कंपनी and plus the proportion of the number of share they already have. So that is called as right to issue, यानी कंपनी अपने अंदर के ही शेयर होल्डर्स को नई सिक्योरिटीज़ को सोल्ड कर रही है. नेक्स्ट इज EIPO. नाउ EIPO इज बेसिकली where initial public offer. It is basically called as initial public offer. E is written there. E basically means where we will be selling our securities by the help of internet or networking. So just see, a company proposing to issue capital to the public through online system of stock exchange has to enter into agreement with the stock exchange. This is called as
an initial public offer, right? It means if any organization is there who want to issue the capital to the public, जो अपने capitals को public को issue करना चाह रही है through online system, so in that case this they have to enter into a stock exchange. उनको एक स्टॉक एक्सचेंज के साथ में एक एग्रीमेंट करना पड़ता है, एंड दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज आईपीओ. उस एग्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं. सो इन दैट केस इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज एंटर इनटू आईपीओ, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आईपीओ में एंटर कर गई है, तो बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट और नेटवर्किंग दे कैन एबल टू ट्रेड आउट देयर सिक्योरिटीज इनटू द stock market. Now, SEBI registered broker have to be appointed for the purpose of accepting application and placing order with the company. Now, this is the rule of Stock Exchange Board of India that after listing into the stock exchange also, अगर किसी ने आईपीओ एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट बना लिया है, उसके बाद भी उसको एक ब्रोकर अपॉइंट करना पड़ता है, और वो ब्रोकर सेबी से रिलेटेड अपॉइंटेड ब्रोकर होगा, राइट, लिंक्ड ब्रोकर होगा. नाउ दिस ब्रोकर वर्क विल बी टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन और प्लेसिंग ऑर्डर विद द कंपनीज, यानी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना और कंपनी के लिए ऑर्डर्स को प्लेस करना. इट मीन्स ही इज बेसिकली गोइंग टू लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर एंड बिटवीन द कंपनी, और सेवर और इन्वेस्टर के बीच में इसको लिंक का काम करना होता है. सो दैट इज ऑल अबाउट EIPO. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, दैट इज सेकेंडरी मार्केट. Now, what is secondary market? As we have already discussed this earlier in a shorter manner, the secondary market is basically where the old or existing securities are going to be sold. जहाँ पे कि पुरानी securities क्या होने वाली है, sold होने वाली है. That is called as secondary market. Now, secondary market is also called as stock market. जो हमारा स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मार्केट ओनली. यहाँ पे पुरानी सिक्योरिटीज़ को ही डिसइन्वेस्ट किया जाता है और उसके बाद री इन्वेस्ट किया जाता है. दैट इज़ द रीज़न इट इज़ अ मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी. It help existing investor to disinvest and fresh investor to enter the market. Now, how this is possible that फर्स्ट आप डिसइन्वेस्ट कर रहे हो और उसके बाद आप री इन्वेस्ट कर रहे हो. सो दिस इज़ पॉसिबल इन टू द सेकेंडरी मार्केट बिकॉज वॉट इज़ बेसिकली हैपनिंग है दैट फर्स्ट when the first time the issues or securities has been done, जब पहली बार सिक्योरिटीज इश्यूज होती है मार्केट में, तो दे कम इनसाइड प्राइमरी मार्केट, राइट. प्राइमरी मार्केट में किसी ने सिक्योरिटीज यानी शेयर्स परचेज कर लिए सपोज. ना इफ दैट पर्सन फाइंड आफ्टर सम टाइम दे वांट टू सेल दीज सिक्योरिटीज एंड दे आर गेटिंग अ हायर प्राइसेस ऑफ दैट टाइम दे नीड टू एंटर इनटू सेकेंडरी मार्केट. वो पर्सन अब कौन से मार्केट में एंटर करेगा, सेकेंडरी मार्केट में एंटर करेगा और उस पुरानी सिक्योरिटीज़ को सेकेंडरी मार्केट में सोल्ड करेगा. सो दैट इज़ द रीज़न फर्स्ट व्हाट इज़ हैपनिंग, इन्वेस्टर ने क्या किया, पहले डिसइन्वेस्ट किया है, जो उसके पास में सिक्योरिटीज़ पड़ी थी फ्रेश सिक्योरिटीज़ उसने उसको बेचा है और उसके बाद में उसे री इन्वेस्ट कर दिया है, सेकेंडरी मार्केट में ला गए. दैट इज़ द रीज़न वी से दैट दिस इज़ बेसिकली अ प्लेटफॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टू डिसइन्वेस्ट एंड फ्रेश इन्वेस्टर टू एंटर इन टू द मार्केट. नाउ we will be talking about stock market, stock exchange, right? So when we talk about secondary market, it means directly we are talking about stock exchange, right? But stock exchange hai kya? Stock exchange is an institutions which provide a platform for buying and selling of existing security. These three lines are important for you. यानी स्टॉक एक्सचेंज क्या एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस है जो कि प्रोवाइड कराती है हमें एक प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हम खरीदते और बेचते हैं अपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़, यानी पुरानी सिक्योरिटी, द सिक्योरिटी विच आर नॉट सोल्ड एट फर्स्ट टाइम. सो दैट इज़ बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज का एक इंस्टीट्यूशन जो कि आपको प्रोवाइड कराएगा प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ योर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़. नाउ स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज़, शेयर्स लाइक डिवेंचर्स. जो आपके स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे आप जो स्टॉक एक्सचेंज में आप सिक्योरिटीज़ को जो एक्सचेंज करोगे, इट विल ऑल्सो इंक्लूड शेयर्स ऑल्सो, इट विल ऑल्सो इंक्लूड योर डिवेंचर्स ऑल्सो. बोथ आर द पार्ट ऑफ सिक्योरिटीज़. इनटू मनी, मनी इसलिए लिखा हुआ बिकॉज हम क्या करें, सिक्योरिटीज़ यानी शेयर और डिवेंचर्स को लिक्विडेट कर रहे हैं, किसमें, मनी फॉर्म में. नाउ स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है कंपनी को फाइनेंस को रेज करने में, फंड्स अपने फंड्स को रेज करने में बाय ट्रेडिंग द सिक्योरिटीज़, providing liquidity by converting the securities into a form of cash, and safety of investment because these organizations are basically a healthy or good financial organization who has a goodwill. इनके साथ में अगर कोई डीलिंग हुई है तो there will be no chances of losses.
right? Now let's see the meaning of stock exchange according to 1956. Whenever a meaning will be asked for you students for stock exchange, आपको जो अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1956 का रेगुलेशन का, उसके अकॉर्डिंग ही इसकी मीनिंग बतानी है. सो अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, stock exchange means any body of individuals, whether incorporate or not, constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying and selling or dealing in securities. It means stock exchange basically क्या है, कोई body है of individuals की, whether it is incorporate or not, constituted for the purpose of, तीन चीज़ों के लिए बनी हुई, एक असिस्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए बिजनेस को. किस तरह के बिजनेस को? जहाँ पे कि खरीदे और बेचे जाते हैं सिक्योरिटीज़ में. सो दैट बॉडी, दैट कॉरपोरेशन इज कॉल्ड एज स्टॉक एक्सचेंज. नाउ in the next video we will be talking about the different function of stock exchange.